So we are live now. Hello everyone. Welcome to today's webinar on design for scalability, user-centric solution. I am Ayushi Jain and will be your host for today's session on behalf of the entire team at Satna Incubation Center and Satna Smart City Development Limited. I like to extend the warm welcome to each one of you. This session has been specially crafted for startups of Satna. Today we have the privilege of learning about design for scalability, user-centric solutions with our esteemed mentor, Mr. Piyush Nagar, entrepreneur and AI strategist, founder of Sixth Sense SIT Solutions, pioneering AI, SaaS, blockchain, fintech solutions, empowering startups and SMEs to success. Sir has guided countless startups unlocking their potential and innovating with purpose. We are truly honored to have his guidance here today. Design scalability ensures that system can handle growing demands without compromising performance, usability, or reliability. True scalability balances technology with the art of understanding users. So let's discover the power of design for scalability. Before we start, I would like to encourage my audience to actively participate in today's session. And if you have any question or queries or thoughts, so you can just feel free to ask in the chat box. Let's make this session as interactive and beneficial as possible. Now I am delighted to hand it over to our esteemed mentor, Mr. Piyush Nagar. So, sir, over to you. Thank you, Ayushi. Thank you for this kind introduction, and I'm very happy to be here. And thanks for giving me this chance to interact with the startups because every time I start interact with the startup, I learn a lot. And since the childhood, that is my primary thing to learn something new. So I have this thing from very long time that every week I meet some new people and learn something new. So it's a privilege for me. So let me share my screen. Can you see my presentation? Yes, sir. Okay, that's great. So let's start discussing about the scaling smart, right? So first of all, it's important to understand what is scaling and why it's important. During this journey, we'll discuss in both languages. I'll just try to be as simple as possible so that you will learn more and that will be more practical. I'll give you practical examples so that you can understand what is scalability, how to achieve that, and why it is very much important, right? So today we'll discuss how to build a user-centric solution that grows with the startup. So that is the theme for scaling smart. So one thing which is very much important is whatever you do, just put users at the heart of scalable things. Like in your startup, user is the primary thing on which you need to focus a lot and primarily focus on that. So I'll start with my message which I give to every startup I meet. So I say to everyone, do whatever it takes to solve your customer's problem. Nothing can stop you to grow, right? So there is one thing only. Either you are building a technology, a product, a D2C brand, or anything. You should focus on one thing, that how exactly you are solving the customer's problem, right? So if you have that in primary focus, no one can stop you to grow. All the hurdles will pass eventually, either technology hurdles or funding hurdles or anything, or team or anything. Just focus on customer's problem. So customer is the heart of the journey. So while scaling, while thinking about the design thinking, just focus on the customer. Let's discuss the objective a bit.
right? So understand what scalability is critical to startup, because once you understand that this is very much important and critical for your startup, then only you can apply that, or you'll think that about that seriously, right? And then we'll learn how user-centric solution drive the growth into the organizations, and how to implement those strategies to scalable and user-friendly products. So product means you might have an e-commerce application, you have a D2C product, or you have a B2B solution, or a SaaS product, or anything. So whatever product you have, there is possibility for scalability. You just need to think about it by putting customer at the center, right? So this is a complete objective which you will achieve. So before moving forward, we should think about why and how startups failed just because of not thinking about scalability, or never kept the user at the center of the scalability, right? So we have big examples like Google Lens. So you might have heard the name Google Lens. सभी ने सुना होगा कि Google ने कुछ एक Google Lens launch किया है, which is complete digital AR based thing, and ये revolutionize कर देगा पूरा industry को and everything. A lot of buzz was there about that, but it completely failed, right? One startup which was Doodhwala, that was again looks like a great idea, that was funded as well, but got failed, right? We got Zappay, but they need to take exit from India, right? They were not able to scale that solution into India, right? So you need to think about all the hurdles which might come in future, right? When you come in contact with the customers and when you scale the solution. So right now your solution might be good, but it is good when you scale or not, that should be identified earlier. So फेलियर से थोड़ा ज्यादा सीखने को मिलता है। हम लोगों ने बचपन से सुना भी है, ठोकर खा के ठाकुर बनते हैं, राइट? सो जब तक आप गिरोगे नहीं, तो गिरने से अच्छा है कि दूसरे जो गिरे हैं उनसे हम लोग सीख लें, राइट? सो गूगल गिरा है, दूध वाला गिरा है, ज़ैप, हंड्रेड्स ऑफ स्टार्टअप्स है देयर। सो उनकी स्टडी जो स्टोरीज हैं उससे कुछ लर्न करने का ट्राई करते हैं। सो गूगल ग्लास ने क्या गलती किया? तो वेयरेबल स्मार्ट डिवाइस बनाया जो बहुत अच्छा था, ब्यूटीफुल था, एआर कॉम्पेटेबल था, हैंड्स फ्री एक्सेस दे रहा था इंफॉर्मेशन का, एवरीथिंग, राइट? बट यूजर्स के पर्सपेक्टिव से उन्होंने सोचना शायद नहीं सोच पाए उतने अच्छे से कि प्राइवेसी कंसर्न्स क्या हो सकते हैं। दूसरा, प्रोडक्ट का कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई था, $1500, जो एक क्लास ऑडियंस ले सकता है, बट मेन स्ट्रीम जो अडॉप्शन है वो पॉसिबल नहीं है इस कॉस्ट के साथ में। लिमिटेड फंक्शनैलिटी, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन का ही फंक्शनैलिटी था, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। इसलिए इनोवेशन बहुत अच्छा था, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा अच्छी थी, यूजेबिलिटी हाँ थी, बट पब्लिक परसेप्शन नहीं था लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए, राइट? सो दैट्स व्हाई उसमें बहुत सारा पैसा भी लगा, टेक्नोलॉजी भी लगी, ब्रांडिंग भी लगा, सब कुछ था, बट दैट वाज फेल्ड। सो जब आपके प्रोडक्ट और यूजर में जेल नहीं होता, तो प्रोडक्ट फेल हो जाते हैं, राइट? सो यू नीड टू फोकस ऑन दैट थिंग। दूध वाला, सो हाइपर लोकल डिलीवरी प्लेटफॉर्म फॉर मिल्क ओनली, राइट? नीश बहुत अच्छा सिलेक्ट किया था, प्रोडक्ट बहुत अच्छा था कि दूध हर घर की डिमांड है, डेली डिमांड है, बट चैलेंजेस को नहीं समझ पाए कि मिल्क इज अ पेरिशेबल प्रोडक्ट, उसकी लाइफ कुछ घंटों की होती है, उसकी डिलीवरी को कैसे मैनेज करेंगे, उसकी स्केलेबिलिटी पे कैसे जाएंगे? एक एरिया में तो कर लेंगे, बट पूरे शहर में करना है तो कैसे करेंगे, पूरे स्टेट में कैसे करेंगे, पूरी कंट्री में कैसे करेंगे, या अगर बाहर जाना है तो कैसे जा सकते हैं? स्केलेबिलिटी का थोड़ा प्रॉब्लम था, जो ऑपरेशनल चैलेंजेस बन गए लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस के, जिसके कारण कैश फ्लो इश्यूज जनरेट हुए, बिकॉज मार्जिन इज ऑल्सो शॉर्ट, है ना? क्योंकि दूध इज अ पेरिशेबल प्रोडक्ट एंड अ कमोडिटी एज वेल, जहाँ पे मार्केट में प्राइसिंग सब कुछ एक जैसा ही होता है, सो यू डोंट हैव दैट मच मार्जिन टू प्ले विथ। सो हमको ये भी समझना होता है कि ठीक है, हमने प्रोडक्ट बहुत अच्छा देख लिया, बट जैसे ही स्केल होगा, 10 कस्टमर के साथ बहुत अच्छा काम कर रहा है, बट अगर 10,000 कस्टमर्स होंगे तो क्या होगा? दैट वी नीड टू थिंक अबाउट। ज़ैपे, सो इनके साथ केस कुछ अलग ही है, राइट? सो एक लीडिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है,
challenges जो आए वो regulatory compliances हैं. So when you play into the technology, you need to think about the law of the land as well. कि जहाँ पे आप काम कर रहे हो, कई बार आप जब छोटा काम करते हो तो कोई ऑब्जेक्शंस नहीं आते हैं, कहाँ कहीं से भी नहीं आते हैं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं करता कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो. बट एज एंड व्हेन यू स्केल एंड यू गेट बिगर, तो आप दिखने लगते हो तो वहाँ पे आप पे बहुत सारी चीजें आने लगती है. तो ये आपको पहले सोचना होता है जब आप प्रोडक्ट को इनिशियली बना रहे हैं. सो दैट विल हेल्प यू टू ग्रो. सो ये कुछ फेलियर स्टडीज हैं, ऐसी कुछ स्टडीज और आप पढ़ सकते हैं जिससे आप समझ सकते हो कि आपको आपके बिजनेस में क्या क्या चीजें पहले से सोच के रखनी है. Now let's jump on to scalability. क्यों जरूरी है? Why scalability? Because scalability से क्या problems हो सकती है, that we already discussed with the examples. Now we need to understand कि हमारे startup में why exactly it is very much important. So I'm discussing with multiple startups over here. So you need to like think like how exactly you can relate that with your own startup. कि उसके साथ में connect करके आप क्या क्या चीजें निकाल पा रहे हो. Right? Scalability ensures the growth without sacrificing quality, right? So I will see the examples as well कि किन्होंने बहुत अच्छे से scalability को manage किया and they've grown a lot. Early stage decision can become bottleneck during the rapid expansion. Because when we start building, if your foundation is not good, if you never thought about the product and scalable way, so that might hamper your growth in future, right? So that completely affects. So these are like important stuffs that why exactly scalability matters a lot for startup. So classy example which exactly we feel every day is Instagram. So from the initial day, it was designed for global scale, right? Focused on lightweight architecture and minimalistic UX, right? So they designed that way only. So till now, they are following that stuff and they are growing, right? And they grown massive. So in the initial stage, the product was very simple. They designed it very nicely, and the team was also small, right? And but they scaled a lot with that because they have that thought in their mind that we should keep it scalable for the global audience. They want to get each and every person available on the earth. So that is the target. So then they build the product and it works. So now I have a question for you that whatever product you have, either technology or a B2C product or B2B or SaaS or anything, so is your product ready to handle 10x more user if I'll give you 10x more user tomorrow? Or if you have 100 users today and you'll get 1,000 users tomorrow or by the next week, can you handle that? It won't collapse, right? So just ask this question to yourself and write the answers. And then find the solution that if that is the case, if you got 1,000 customers tomorrow, you want to be able to handle that, then you need to rework on your product to make it scalable. So let's discuss about the principles of user-centric scalable design. So it all starts with the user journey. So I said that customer is the primary thing whenever you're building a startup or a product or anything. You just need to see user's journey. You need to map out all the pain points, their goals and actions and everything. I'll give you an example of our own startup, which is Credit Samadhan. So what we have observed, like prior to this, I was mentoring a lot of fintech startups. So during that journey, I have seen that one of our startup was getting around 1 lakh leads for loan every quarter, right? And they were having around 35 different banking and NBFC partners to lend the money to the customers. So customers were there, 1 lakh customer per quarter, 35 banking partners to serve the lending to them, right? But 99,300 loans were getting rejected, right? So that was the pain point. So that triggered a number that only 700 people are getting loan
out of 1 lakh. Why it is happening? Then we deep dived into it. We have gone through banks, NBFCs, other loan agents, and everywhere. We discussed with them that how many cases you are getting every day, how many cases are getting like rejected. Then we try to communicate with the customers that like whenever you applied for the loan, what kind of problems you're facing. So we understood the pain in their journey. They're applying to one bank is rejecting their loan, they are going to another bank, then they are going to another bank, and eventually they are borrowing money, then less than required money with higher interest rate, right? So which basically disturb the whole financial life for them. So that was the user journey and that was the pain point. And we have observed that around 70% of people was facing issue just because of the credit score. So we built a solution, Credit Samadhan, where exactly we improve the credit score for the individuals, right? And within just 4 to 5 months, we opened 400 franchisees for that. So once you understand the pain point, so it took us around 1.5 year to understand the pain points and to find out the solution. And once we launched, we got the success in 5 months only. So if you work more prior to launching the product to understand users' pain point, goals, their actions, then you can define a scalable journey. And once you put that into the place, you'll get the results, right? Then you need to design for the flexibility. So you might be creating an e-commerce or any product or anything. So you should design that in a way wherever you want to scale that up, there will be no bottlenecks. You can scale that very easily, like Paytm. So Paytm just started an application to recharge the mobile. Now it's a super app. You can do anything with Paytm related to finance, right? You can take loan, you can make payments, you can buy insurance, you can buy tour packages, you can buy products as well, right? So they integrated e-commerce as well. So all the things are there, and the application is same, and it's completely scalable, and you can see the scale. Prioritize speed and efficiency. So when we talk about the digital product, speed is very much important because the attention span is quite low, right? So when your application lag a bit, users move out from that, right? If efficiency is not good for your technical application or your product, so it's at the both places, like the platform which you are serving or the product you are delivering. For example, you are D2C brand and you are providing any healthcare product, and if the product that efficiency of that product is not good, that also won't work, right? But in tech perspective, we'll discuss about Flipkart. So if the system is little bit slow, it like user drop off and move to the another side. They will move to Amazon or any other competitor and buy the product from there, right? So they created a scalable design for their website. So when you go, any user visit Flipkart, the speed is good every time, despite of having huge number of audience or huge audience, right? So you need to think about that as well, that how exactly you can create architecture which help you to prioritize your speed and efficiency in your product. Now steps to build the scalable user-centric solution. So as we understood the users, so in the last slide I explained that we communicated with a lot of customers. So similarly you can conduct surveys, डायरेक्टली जाओ, इंटरव्यू करो, लोगों से बात करो, आपको जो लग रहा है ना ये प्रोडक्ट मेरा खरीद सकता है, उससे जाके कुछ भी बात करो, किसी भी तरीके से बात करो। और कई बार ये नहीं होता कि हम डायरेक्टली प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि उसको प्रॉब्लम क्या है। कई बार हम लोग इनडायरेक्टली बात करते हैं तो भी हमें समझ में आता है कि उसको हम ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो हमारी जो प्रोडक्ट है वो सॉल्व कर सकता है। हम हो सकता है कॉम्पिटिटर के बारे में बात करेंगे और वो कॉम्पिटिटर के बारे में 10 ऐसी चीजें बोल देगा जिससे हमको समझ में आ जाएगा कि ये प्रॉब्लम तो हमारे इसमें भी है। तो अगर ये कॉम्पिटिटर की ये प्रॉब्लम्स बता रहा है या कॉम्पिटिटर की ये अच्छी चीजें बता रहा है, दैट मीन्स ये चीजें लोगों को अच्छी लगती है, ये प्रॉब्लम्स लोगों को बुरी लगती है। सो वी कैन डिफाइन दैट थिंग।
और जब आप उसको कंसोलिडेट करोगे, अगर आप 100 लोगों से मिले हो, 100 लोगों से आपने क्वेश्चंस पूछे हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के बारे में, जनरली एक आइडिया लिया है अबाउट दैट थिंग ओनली, सो आपको समझ में आ जाएगा कि यार मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कहाँ पे एम्पैथी क्रिएट होती है कस्टमर की साइड से प्रोडक्ट के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आपका प्रोडक्ट, अगर आपने आज प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया है, तो आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पूछ सकते। बट दूसरे प्रोडक्ट्स वो जो यूज़ करते हैं, दूसरे ब्रांड से जो वो कनेक्टेड है, वहाँ पे आप समझ सकते हो कि कोई भी पर्सन किसी ब्रांड के साथ में कनेक्ट क्यों होता है। और जब वो ब्रांड स्केल हो गया है, तब भी लोग कनेक्टेड हैं, तो क्यों कनेक्टेड? आस्क मी जब स्केल हुआ तो बस्ट हो गया। जस्ट डायल स्केल हुआ तो उसने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दिया, राइट? बोथ आर इन सेम स्पेस, बट जस्ट डायल से आज भी लोग कनेक्टेड हैं। So why people are connected with just dial? So you need to understand that. So that has come with the user-centric solution. So understand user by survey, interviews, empathy map, or communication. That is one thing. Second is prototype and test. So whatever information you receive from conducting surveys, interviews, communications, and all, create a prototype. And for prototype, there is no need to spend a lot of money, right? Use any SaaS platform, any open source thing, or use Figma or Adobe, that kind of solutions which will help you to get a basic prototype ready for you. Just get that ready, launch that product, and move ahead with that and get the results. Then build an iteration. So there is one thing. If you see any good application, any scalable application, any application which scaled a lot, like Facebook, Instagram, WhatsApp, or anything. So if you go onto their Google Play Store account or Apple account, you will see there is thousands of updates, right? They push updates every day, every week, every month. So why exactly they do that? Because that is an agile methodology. You can't do everything at a point of time and make it launch, right? Once you launch that, you'll learn few things, then you'll iterate that. You'll update that. Once you'll update, you'll move forward with that only, right? So you'll see that pattern with all the industries, not only with the application, with the websites as well, with the physical product as well. कि आप अगर कोलगेट यूज कर रहे हो, यू कैन सी इन लास्ट 10 years कितनी बार डिजाइन चेंज हुआ है, कितनी बार टेस्ट चेंज हुआ है, कितनी बार उसका थिकनेस चेंज हुआ है, कितनी बार उसका कैप चेंज हुआ है, कितनी बार प्राइसिंग चेंज हुआ है, कितनी बार वेरिएंट चेंज हुआ है. सो दे आर चेंजिंग जस्ट टू मेक इट रिलेटेबल टू द कस्टमर्स, बिकॉज कस्टमर से रिलेटेबल रहेगा तो वो compete कर पाएगा, स्केल कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा. देन प्लान टू स्केल. सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि जब हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं एज ए स्टार्टअप, तो दिमाग में होता है ठीक है अभी तो बेच लें, एटलीस्ट इतना तो कर ही पाएंगे कि अपने शहर में बेच देंगे, अपने देश में बेच देंगे, फिर देखेंगे स्केल कैसे करें. बट इफ यू हैव दैट माइंडसेट, एक जगह पे जाके आप स्टक हो जाओगे, बिकॉज आपको नहीं पता है कि आपको 5 फ्लोर की बिल्डिंग बनानी है. सो आपने इनिशियली सिंगल फ्लोर बनाया और उसके अकॉर्डिंग पिलर्स बहुत छोटे बना दिए. सो यू कांट स्केल दैट टू 5 फ्लोर. अगर आपको 5 फ्लोर्स पे जाना है तो फिर पूरा बिल्डिंग को डिमोलिश करना पड़ेगा और वापस से जाना पड़ेगा. So at the point when you are starting, you should have that optimized structure that will help you to scale and grow the traffic. We'll see few examples as well. Now, just move to Airbnb journey. Right? So, within 1 year, they scaled from 1,000 users to 1 million users. If they might have not thought about the scalability or scalable architecture, so क्या होता? Airbnb फेल हो जाता है. वो आज वो नहीं होता जो आज है. So what exactly they did? यूजर एक्सपीरियंस पे बहुत ज्यादा फोकस किया, दोनों के लिए, कि होस्ट के लिए कितना अच्छा यूजर एक्सपीरियंस बना सकता हूँ, ट्रैवलर के लिए कितना अच्छा यूजर एक्सपीरियंस बना सकता हूँ. देन स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर चूज किया, लाइक दे मूव्ड ऑन टू AWS. फिर AWS पे ही बनाते हैं, कितना भी स्केल करेगा, कितना भी लोड हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा. AWS कैन हैंडल दैट,
राइट? सो वहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर दिया, प्रॉब्लम नहीं आया। उसके बाद लोकलाइज्ड एक्सपीरियंस क्रिएट किया ग्लोबल यूजर्स के लिए, बिकॉज़ दे आर ग्लोबल प्लेयर, राइट? सो ऑस्ट्रेलिया का बंदा है जो हांगकांग में जा रहा है, या हांगकांग का बंदा है जो यूएसए जा रहा है, या सिंगापुर का बंदा है जो मलेशिया जा रहा है, या चाइना जा रहा है, एंड दे आर यूजिंग एयरबीएनबी। सो दे जस्ट ट्राई टू क्रिएट अ एक्सपीरियंस कि कोई भी ग्लोबल यूजर है, वो थोड़ा सा भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, कुछ भी कंफ्यूज नहीं हो, एकदम क्लियर हो कि अगर वो जाता है तो उसको उसकी लैंग्वेज में प्रॉपर चीजें इस तरीके से दिख जाए कि वो इजीली सर्विस को ग्रैब कर पाए, राइट? सो अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? सीमलेस यूजर एक्सपीरियंस उन्होंने क्रिएट किया, तो कितना भी रैपिड ग्रोथ हो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, राइट? सो हमको इससे क्या सीखना होता है कि एयरबीएनबी ने जो किया, उससे हमको ये सीखना होता है कि हमें जो भी बनाना है आज, उसके लिए हमको फ्यूचर को माइंड में रखना है। आज आप एक पेपर पे ही बना रहे हो, अब एक प्रोटोटाइप भी बना रहे हो, यू शुड थिंक कि फ्यूचर में कहाँ तक जाने वाला है, उसके लिए मुझे कैसे सॉल्यूशन बनाना है। सो प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज फॉर स्केलेबिलिटी। अब होता है ये फाउंडर्स के साथ में इनिशियल लेवल पे बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब हम शुरू में स्टार्ट करते हैं तो एक इंक्यूबेशन सपोर्ट मिल गया, दैट इज क्वाइट गुड। बट अपार्ट फ्रॉम दैट हम अकेले हैं, या एक तो फाउंडर साथ में है, या बहुत छोटी सी टीम है, फाइनेंशियल उतना स्टेबिलिटी होता नहीं है ना? क्योंकि स्टार्टअप कर रहे हैं तो पैसा वैसे ही कस्टमर से आ नहीं रहा है, पेरेंट्स ने जितना थोड़ा बहुत दे दिया वो दे दिया, और कहीं से ला नहीं सकते, तो अब क्या करेंगे? तो अब ये होता है कि मैं डे टू टास्क में इन्वॉल्व हो जाता हूँ। यार ठीक है, अकाउंटिंग के लिए अकाउंटिंग हायर नहीं कर सकते, मैं ही कर लेता हूँ। कंटेंट राइटिंग के लिए बंदा हायर नहीं कर सकते, मैं ही कर लेता हूँ। डिज़ाइन के लिए नहीं कर सकते, वो मैं कर लेता हूँ। तो हम ये सारी चीज़ें करने लग जाते हैं। और जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं, तो हमारा जो कोर फ़ोकस है, कोर प्रोडक्ट है, उस पे टाइम सबसे कम जाता है और प्रोडक्ट फेल हो जाता है। और इवेंचुअली स्टार्टअप स्केल तो दूर, थोड़ा-सा भी आगे मूव नहीं कर पाता। तो अगर हमको स्केलेबिलिटी पे जाना है, तो हमको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे अपने आप को भी स्केलेबल बनाना पड़ेगा, कि आज मैं जो काम कर रहा हूँ, जैसे काम कर रहा हूँ, मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन को एक ऐसे लेवल पे जाना है जहाँ पे मिलियंस ऑफ यूजर्स, मिलियंस ऑफ कस्टमर्स हैं। सो वहाँ पे मैं स्केल कैसे कर पाऊँगा? वहाँ पे मैं अपने आप को हर जगह पे इन्वॉल्व नहीं कर सकता, तो मुझे ऑटोमेट करना है रिपिटिटिव टास्क को। क्या कोई टूल मैं रेंट आउट कर सकता हूँ, कोई SaaS प्लेटफ़ॉर्म ले सकता हूँ, या किसी को डेलीगेट कर सकता हूँ, या कुछ छोटे टूल्स परचेज़ कर सकता हूँ, जिससे मेरी कुछ चीज़ें ऑटोमेट हो जाएँ, जहाँ से मैं बाहर हो जाऊँ। ओके? सो ऑटोमेशन को हम लोगों को लेके आना है, अपनी जिस-जिस प्रोसेस में ला सकते हैं, राइट? इफ यू आर इनटू टेक प्रोडक्ट, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, सबसे ज़्यादा जो यूज़र्स हैं मोबाइल पे हैं, तो हमको जो भी डिज़ाइन करना है, वो मोबाइल फर्स्ट करना है। कि पहले मोबाइल पे चीज़ों को देखना है, उसके बाद दूसरे डिवाइसेज़ पे देख होता ये है कि पहले हम दूसरे डिवाइसेज़ पे देखते हैं, फिर उसको मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज़ करते हैं। ऑप्टिमाइज़ करना इज़ अ डिफरेंट थिंग, एंड मोबाइल फर्स्ट डिज़ाइन बनाना इज़ अ डिफरेंट। सो लाइक अर्लियर वी यूज्ड टू से कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाएँगे, तो किसी भी स्क्रीन पे अच्छा चलेगा, राइट? सो रिस्पॉन्सिव इज़ कि सब जगह अच्छा चल रहा है, बट उसमें भी जो बेस होता था, वो कंप्यूटर होता था, वो लैपटॉप होता था, वो मैकबुक होता था। बट बेस यू नीड टू कीप मोबाइल, राइट? सो पहले मोबाइल के लिए बनाओ, फिर बाकी चीज़ों के लिए बनाते हो। लेवरेज डेटा एनालिटिक्स। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। डेटा एनालिटिक्स को हमको लेवरेज तो करना है, कि हम प्रिडिक्ट कैसे करेंगे यूज़र के बिहेवियर को, आगे का प्लान कैसे करेंगे, स्केल कैसे करेंगे। ये आता है थोड़े आगे के लेवल पे, जब कुछ आप बेचने लग जाते हो, कुछ पैसा बनने लग जाता है, कुछ चीज़ें होने लग जाती है, तब होता है। बट उसको आपको लेवरेज कैसे करना है, वो इम्पोर्टेंट है, तो डेटा आपके पास सारा होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको ऐसे नहीं करना है कि भई डेटा कहीं भी आ रहा है, उसको बैठ के आप डेटा बनाने बैठ गए हो। एक अपने लिए अलग से काम पाल लिया है, कि भई डेटा बना रहा हूँ मैं, क्यों बना रहा हूँ? एनालिटिक्स करना है, 7 दिन तक बैठ के डेटा ही बना रहा हूँ। वो नहीं करना है, कुछ सॉल्यूशन ऐसा बनाना है जिसमें आपके पास रेडीमेड डेटा रियल टाइम में बनना चाहिए। जो भी डे टू डे एक्टिविटीज़ हो रही है, उसका डेटा बैकएंड पे बनते रहना चाहिए, जिसको आप डेली देख पाओ। तो कुछ ऐसे सॉल्यूशन बनाओ, बहुत लाइट वेटेड अच्छे सॉल्यूशन बना सकते हो, जिससे आप एनालाइज़ कर पाओ। इसको एक अलग से काम मत बना लेना, कि मुझे डेटा इकट्ठा करना है, फिर बनाना है, फिर एनालाइज़ करना है। डेटा
एक प्रोसेस है जो डे टू डे साथ में चलनी चाहिए, एंड यू जस्ट यूज दैट डेटा टू अंडरस्टैंड एंड प्रिडिक्ट द बिहेवियर एंड चेंज immediately, right? Common mistakes what people do with scalable design is ignoring feedbacks. So feedbacks को ignore कर देते हैं, ठीक है यार, कस्टमर तो बोल देता है मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा जानता हूँ। तो कुछ फाउंडर्स होते हैं जिनको अपने प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा प्यार होता है, वैसे तो सभी को होता है, बट जिनको बहुत ही ज्यादा होता है उनको प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो अगर कोई कस्टमर आके कुछ कंप्लेन भी करता है, बोलता है ये कस्टमर बेकार है, राइट? बट हमें वो नहीं करना है, वी नीड टू लिसन कि यार कस्टमर क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, उसकी डेप्थ में जाओ, 10 कस्टमर से और बात करो कि आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है क्या? अगर 10 नहीं बोलते हैं तो हम समझ सकते हैं कि ठीक है, बट अगर 10 में से 3 लोगों ने भी बोल दिया तो हमें उसको रिपेयर करने की ज़रूरत है। क्योंकि यही नंबर बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि आज 10 है, 10,000 कस्टमर्स होंगे तो उसमें भी प्रॉब्लम आएगा। ओवर इंजीनियरिंग करना, बहुत ज़्यादा शुरू में ओवर इंजीनियर करके कॉम्प्लेक्स कर देना सॉल्यूशन को, दैट इज़ ऑल्सो अ मिस्टेक, तो हमको उतना ज़्यादा भी नहीं करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर को नेग्लेक्ट कर देना कि ठीक है यार, अभी तो सस्ते वाले शेयर्ड होस्टिंग पे चला लेते हैं, बाद में समझते रहेंगे जैसा भी होगा, ट्रैफिक आएगा तो। So it's quite difficult to move that onto scalable infrastructure at the later stage. So you need to think about that as well. Now, there is an activity for you. So as we are near to close this session, so an activity is there which you should do yourself or with your team, or you can take help from like peer startups as well. So, for example, you are launching a startup or a product or technology or changing the strategy, right? That might scale your startup to 10x users in 6 months. So, for example, you have 100 customers at the moment. In next 6 months, you will be getting 10x or 100x users. So, what feature would you prioritize to ensure the scalability and satisfaction? सो अगर आप एक ई-कॉमर्स बना रहे हो, 10x यूज़र्स आते हैं, तो आप क्या चीज़ें प्रायोरिटाइज़ करोगे कि मुझे ये चीज़ सबसे ज़्यादा फ़ोकस करना है? या अगर आप एक डी2सी प्रोडक्ट बना रहे हो, तो क्या फ़ोकस करना है? अगर एक सास प्रोडक्ट बना रहे हो, तो क्या फ़ोकस करना है? दैट यू नीड टू राइट डाउन एंड डिफाइन कि हाँ, 10x होता है तो मुझे ये करना है, 100x होता है तो उसके लिए मुझे ये चीज़ प्रायोरिटी पे रखनी है। क्योंकि करना तो सब है, बट कौन-सी चीज़ कब करना है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। Right? So now we are at the end. So scalability start with your users. If you design for their needs today, your product will grow with them tomorrow. Right? So if you are looking at the brighter tomorrow, then you need to focus on your users today. So if you have any kind of questions or if you got any question in chat, so please feel free to ask. Sir, we have got one question from Sanjay. Yeah. The question is, he's developing an application. तो अगर उनका क्वेश्चन है कि अगर बहुत सारे ऑप्शंस हैं उनकी एप्लीकेशन में एंड लिमिटेड फीचर्स के साथ स्टार्ट कर देना चाहिए या फुल फ्लेज्ड एप्लीकेशन डेवलप होने के बाद उनको स्टार्ट करना चाहिए एप्लीकेशन। लिमिटेड फीचर्स के साथ में लॉन्च कर देना चाहिए। सो लिमिटेड फीचर्स के साथ में जब आप लॉन्च करोगे तो आपको समझ में आएगी कि जो फीचर्स आपने अभी बनाए हैं वो यूजर्स के लिए कितना ज्यादा वैल्यू रखते हैं, राइट? और उसमें भी कुछ सजेशंस होंगे तो वो आपके पास साथ में आएंगे, तो आप जो दूसरी चीजों पे काम कर रहे हैं उसके साथ में इसको भी अपडेट कर पाएंगे और आपको स्केलेबिलिटी के लिए थोड़ा सा ईज होगा आगे जाके जब आप उस एप्लीकेशन को स्केल करने लगेंगे। Sir, I would like to take one or two question more on behalf या of the प्लीज। startups. So the similar question is there how do a startup can prioritize scalability in resource limited scenarios? So, scalability is more of a mindset, right? It's not like related to the resources, right? Right now, for example, I'm planning to construct a building, right? तो अब मुझे अभी तो नक्शा बनाना है, राइट? तो मैं 5 फ्लोर का बनाऊंगा या 10 फ्लोर का बनाऊंगा, कॉस्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है।
राइट? तो मैं नक्शा तो बनाना स्टार्ट कर सकता हूँ कि यार मैं 10 फ्लोर का नक्शा बना लेता हूँ, बनाना मेरे को 2 फ्लोर ही है, बट मैं उस लेवल पे प्लानिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। सिमिलरली आप जब ई-कॉमर्स पे भी जाते हो, सो फॉर एग्जांपल आपको लगता है यार मैं वर्डप्रेस पे बना लेता हूँ अभी, तो खर्चा नहीं आएगा, बहुत कम कॉस्ट में बन जाएगी, शेयर्ड होस्टिंग पे डाल देता हूँ, वो भी चल जाएगा। बट यू नीड टू थिंक कि क्या मैं उसको माइग्रेट कर सकता हूँ इमीडिएटली? उसको माइग्रेट करने में कितना टाइम लगेगा? क्या माइग्रेशन पॉसिबल है? क्या जिस भी प्लेटफ़ॉर्म पे मैं माइग्रेट करने जा रहा हूँ, अगर 1 मिलियन यूज़र होंगे तो मुझे कहाँ माइग्रेट करना पड़ेगा और उस टाइम पे मेरे पास क्या-क्या चैलेंजेस आएँगे? यू नीड टू हैव दैट आंसर्स विथ यू। तो फिर प्रॉब्लम नहीं है कि आप चला लो, ठीक है, 10,000 यूज़र्स तक वर्डप्रेस हैंडल कर लेगा, तो आप उसको बना लो, बट यू शुड हैव अ प्लान कि यार अगले ही मंथ अगर 1 लाख यूज़र्स हो गए तो मैं इसको माइग्रेट कर पाऊँगा तो कितने दिन लगेंगे और कैसे करूँगा? सो दैट यू कैन प्लान। ओके सर। सर, सिमिलरली प्रोडक्ट्स एज़ वेल, कि अगर आप फिज़िकल कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, तो पैकेजिंग उसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती है, राइट? तो पैकेजिंग के लिए आप कोई रेडी पैकेजिंग के साथ में जा सकते हो, बट ऐसी पैकेजिंग के साथ में जाओ, जिसको आप बल्क में कभी भी प्रोक्योर कर सकते हो। राइट? ताकि जब स्केल हो तो आपको पैकेजिंग को चेंज नहीं करना पड़े। अभी ठीक है, थोड़ा-सा पैसा ज़्यादा लगेगा, पर प्रोडक्ट आपका यूनिट इकोनॉमिक्स में लॉस होगा, वो चल जाएगा। बट वो जब आप स्केल करो तो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। वो कुछ ऐसा नहीं हो कि हमारे पास अवेलेबल ही नहीं हो पाए, जब एकदम से हाई डिमांड आए। thank you for answering, sir. Second question I would like to take. What's the first step to integrity scalability into product design? So in product design, if you want to integrate the scalability, so as I said, firstly, that founders should have scalability in their mind, that they want to put scalability first, right? Then it completely depends on the product. For example, I'm building a SaaS CRM, okay, for B2B users. So now I need to think कि मुझे SaaS CRM बनाना है, बिज़नेसेस के लिए बनाना है। So मैंने कुछ लिमिटेड फीचर्स को पहले लिया, बट जो भी मैं मास्टर्स, जो भी मैं आर्किटेक्चर बना रहा हूँ, उसको मैं ऐसे प्लान करूँगा कि दैट आई हैव मल्टीपल नोड्स ओपन, कि मैं कभी भी उस पे प्लग एंड प्ले कर सकता हूँ। कि मेरे अगर फॉर्म्स हैं, तो ऑल फॉर्म्स आर डायनामिक, उसमें जो फील्ड्स आ रही हैं, these are dynamic, so that I never need to change the code again. I can go and change into the database and it will reflect, right? So if the form is of 7 fields right now, but I want to make it 100 field form, so there needs to be a possibility at the back end that we can do that through the database changes only. We never need to change anything in the code. So these kind of few small steps you can plan, and always choose a good architect, right? Because coders are different, developers are different, and architects are different. So sometimes what happens that if we are getting a cheap coder, so we just hire that coder to do coding stuffs for us, right? But coder can't think beyond the boundaries. They can't see the future. They can't see the scalability, right? You need to discuss with an architect, with a developer who have the vision, who have seen that particular scalability or studied about the scalability and planning as architecture for scalable applications. So there is one more question from our startup. The person has asking, sir, healthcare aggregator platform build कर रहे हैं ये, तो वो डॉक्टर और डायग्नोस्टिक लैब को अप्रोच कैसे कर सकते हैं? नाइस क्वेश्चन प्रसन्न, एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। मेरे लास्ट सेशन में भी बोला था, अक्सर मैं बोलता हूँ, लाइक व्हेन यू बिकेम द फाउंडर, राइट, और अ स्टार्टअप गाय, तो सबसे पहले तो लाइक जब भी घर से निकलो तो एक शर्म नाम की चीज होती है, जो है सब हिंदुस्तानियों में अंदर से होती है, उसको निकालो और घर के अंदर ही छोड़ के आ जाओ, राइट? अपने प्रोडक्ट के बारे में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास है, उतनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने पास रेडी रखो। अच्छे से क्यूएनए के लिए प्रिपेयर होके जाओ। एक बहुत अच्छा हुक प्रिपेयर करो कि यार ऐसी क्या चीज़ है कि मैं डॉक्टर को बोलूँगा, वो बात करने के लिए तो रेडी हो जाएगा। एंड जस्ट डायरेक्टली गो टू देम।
एकदम बेशरम होके जाके बैठ जाओ, मिल के ही जाऊंगा। हम डॉक्टर्स को दिखाने जाते हैं, एमआरस बैठे होते हैं ना, उनकी जॉब है, उनको पैसा मिलता है, बैठना है, 4-4 घंटे भी बैठते हैं और डॉक्टर से मिलते हैं। सो व्हेन यू डिसाइड कि यार मुझे तो मिलना ही है डॉक्टर से, डिसाइड कर लो किस डॉक्टर से मिलना है, वहां जाओ, वहां जाके बैठ जाओ और एक बहुत अच्छा सा हुक क्रिएट करो, वन लाइन का ओनली। और वो वन लाइन हुक जाके बोलो कि सर मुझे इस पे बात करनी है। ही विल गिव यू द टाइम। वो कितना भी बिजी होगा वो टाइम देगा। राइट, सेम स्ट्रैटेजी आई ऑप्ट। मुझे भी मिलना होता है तो मुझे बहुत बड़े बैंकर्स से मिलना होता है, तो मेरी एक पंच लाइन है, मैं जस्ट वो मिल के वो डाल के छोड़ देता हूँ। एंड आई नो कि मुझे रिस्पॉन्स आएगा ही, एंड नो वन डिनाइज। सो आपको एज ए फाउंडर, क्योंकि आप फाउंडर हो, सीईओ हो, सीटीओ हो, जो भी हो, बट आप सेल्समैन हो। आप सेल्समैन हो तो ही स्टार्टअप चला सकते हो। आप कितने भी अच्छे सीटीओ हो, कितने भी अच्छे सीएफओ हो, कितने भी अच्छे सीईओ हो, आपका स्टार्टअप ग्रो नहीं करेगा अगर आप अच्छे सेल्समैन नहीं। तो सेल्समैन यही होता है कि जाके चिपक जाता है, बात करनी होती है, करनी होती है, के रास्ते निकालता है, वो निकालने पड़ेंगे। Thank you so much, sir, for answering and giving some practical examples to our startups. I want to express our sincere gratitude for sharing your time and expertise during the session. We appreciate your efforts to guiding our startups. Thank you once again for making this webinar a resounding success, sir. I also thanks everyone for joining, and we will connect again in the next session. Thank you so much, sir. Okay, thank you, Ayushi. Thank you all.